Okay, so we are getting started for the first day and the first class of Naviswork. I hope you are all excited and you will learn new things and new details for this software. Okay, I know most of them you are maybe familiar with the software and some of them you not. Okay, but I will try my best to give give the best solution, or I would say कि एक complete मैं knowledge आप लोगों को दे पाऊँ. Then it is going to be a great session. Okay, so let's just start the session and let me introduce myself Rajat Fasal, and I am CAD and MEP trainer for the ptscadexpert as well. I'm the BIM engineer, and I have having a great experience, and I've teach more than 5,000 students currently right now, and most of them are placed into the great companies and like MNC companies as well. Okay, so let me share the screen and let us start the first day and first session. Okay, so welcome to the PTS Care Expert with a team of professionals, and we have trained more than 50,000 plus students yet, and अच्छा खासा हमारा experience रहा है into the AEC industry, and this course especially for the Autodesk Naviswork Manage, which is mostly used by BIM engineers, architects, and AEC professionals. Okay, so in the session what we are going to cover is most important, what is going to be the agenda of today, कि आज जो हम कवर करने वाले हैं, हम क्या क्या बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, उसका एक बार ज़रा एजेंडा क्लियर कर देते हैं. दैट लेट्स अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर फर्स्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ताकि हम पहले ही क्लियर कर लें इस चीज़ के लिए. आई होप एवरी वन कैन सी माई प्रेजेंटेशन. सो we will understand first that what is the software. We will understand its basics and what it is used for, or what it is meant to be. उसके बाद हम we will talk about its history, यानी कि इसका थोड़ा बहुत इतिहास जानेंगे. इतिहास जो है उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, उसके बारे में तो हम थोड़ा बहुत बात करेंगे. सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस को लेकर भी बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, देन की फीचर्स, जॉब स्कोप एंड यूज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये हमारे आज के एजेंडा होने वाले हैं, और एक एक करके हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं. इट्स गोना बी अ थ्योरेटिकल सेशन फर्स्ट. वी विल अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर फर्स्ट. What is the importance of the software into the AEC industry, and how you can upgrade yourself into this software, and why as a student and as an MEP engineer, as a BIM engineer, as an architect, or as a Revit enthusiast, why you should learn this software. You need to understand its entire features and all that stuff. Okay, let's just begin. So first we will discuss about what is the software actually. क्या actually में Naviswork stand करता है. देखिए, Navis क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट रिव्यूइंग सॉफ्टवेयर है. ओके, मोस्ट ऑफ पीपल थिंक कि ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है. नो, इट जस्ट रिव्यू. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रिव्यू. ओके, रिव्यू का मतलब क्या होता है. जैसे आप कभी मूवी देखने जाते हो, लेट्स से आप जब भी कोई मूवी देखने जाते हो, मूवी देखने से पहले आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो कि लेट जस्ट सी मूवी इज बीन रिलीजिंग, सो आई शुड गो फॉर द मूवी. बट it is good or bad, how should I know? So first we will go on to YouTube and search, let's say it's a movie XYZ, and after that we will write review word. Okay, what is it stands for? Okay, let me know from your side what is review stands for. Okay, what is a review for you? Yes, let me know in the chat box में आप comment कर सकते हो and बता सकते हो कि क्या मतलब है. Please type yes or no. If you know about review, then type yes. If you okay, ठीक है. Okay, let's just come on to our topic. Okay, let's talk about actual meaning. Okay, let's just come on it. Okay, what is Naviswork Manage? Okay, I was talking about it's a comprehensive project reviewing and a BIM software. Okay, and project reviewing का मतलब क्या होता है? That is to analyze and check. Okay, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बात कर रहा था मूवी रिव्यूज़ की, ऐसे ही आपने प्रोडक्ट रिव्यूज़ देखे होंगे, या फिर आपने जैसे लेट्स से जैसे कि आप कभी फ़ोन ख़रीदने जाते हो या फिर कुछ भी चीज़ परचेज़ करते हो, तो यू सी फर्स्ट इज़ इट गुड और नॉट. ओके, इट इज़ वर्किंग और नॉट, इज़ इट गुड फॉर मी और नॉट, क्या वो चीज़ काम कर रही है मेरे लिए या नहीं. ओके, दैट इज़ ओवरऑल अबाउट द रिव्यू. इन अ सिंपल सेंटेंस, दैट इज़ टू इज़ इट गुड और बैड, या फिर मैं कह सकूँ कि क्या वो चीज़ सही है, गलत है, लाइक गिविंग रेटिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ. ओके, दैट इज़ द रिव्यू. ओके, बट व्हेन इट कम्स टू द प्रोजेक्ट रिव्यूइंग,
we analyze first कि that project is actually good to go or not. यानी कि हम वहाँ पर चेक करते हैं कि whether project is actually is going to be work on the site or not. किस तरह से project execute होगा and how the projects looks like and what are the issues with the system. ठीक है, हमने जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, जो हाउस हमने डिज़ाइन किया है, या फिर जो बिल्डिंग हमने, जो स्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है, इज़ इट वर्थ इट टू डिज़ाइन इट, लाइक अगर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो कहीं कोई क्लैश तो नहीं आ रहा है. ओके, वी हैव टू सी इट इज़ इट जस्ट क्लैशिंग और वट एवर द इशू इट फेस. ठीक है, कोई भी इशू आता है तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट रिव्यूइंग सॉफ्टवेयर लेते हैं, दैट इज़ योर नाविसवर्क एंड इट्स अ BIM सॉफ्टवेयर. ओके, अब देखो BIM के बारे में तो लगभग सभी फेमिलियर होंगे. हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद द BIM? लगभग सभी ने रेबिट के यहाँ पे किया हुआ है, आई अज्यूम. ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर करने से पहले आपको BIM सॉफ्टवेयर की तो नॉलेज होनी ही चाहिए, बिकॉज इफ़ यू नो अबाउट द BIM देन नाविसवर्क इज़ फॉर यू. हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ BIM? एनीवन? लेट मी नो चैट बॉक्स, लेट मी नो कितने लोगों को BIM के बारे में पता है. बिकॉज वी आर गोइंग इन टू वेरी डिटेल. मैं बहुत डिटेल और डेप्थ में जाऊँगा और कोशिश करेंगे कि चीज़ों को समझने की. ओके, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग. ओके, ठीक है, मोर थोड़ा बहुत पता है. ओके, क्योंकि बिकॉज इफ़ यू नो अबाउट BIM then you know Revit and also you will know Civil 3D and also you will know Navisworks. ठीक है, and let me tell you again, Navisworks is not for designing. Okay, it's not for designing, you should know. Okay, थोड़ा बहुत बाकी स्टूडेंट, बाकी सिर्फ 2 ही लोगों के कमेंट आए हैं. फैजल खान का आया है. ओके, अविनाश रेड्डी. I want to know about BIM. What is BIM? I'm asking about the BIM. Pictorial representation of 3D modeling. Okay, that's a good answer, but 3D modeling comes in other software as well. So what is the difference? Okay, let me repeat that. What is BIM? Okay, because BIM, what is BIM? Let us discuss this first, because if you want to understand the Navisworks, first you should know about what is BIM. Okay, BIM means building information modeling. What is building information modeling? Building information modeling means physical structure represented into a digital version. That is BIM. Okay, जो कि आपका physical structure जब हम उसको digital representation देते हैं, that is BIM. Okay, where we digitally represent the physical structure. Okay, where we can see each and every option like doors, windows, wall, ceiling, column, beam, slab, foundation. Okay, everything, door, window, and whether it's a curtain wall or whether it's a MEP, like duct. Okay, we have electrical fixtures, we have conduits, column, duct, and MEP system like AHU, VAV. Okay, plumbing fixture like aapka that is your WC, and urinals like sink. Okay, like we have sanitary systems where you have piping routings. Okay, we have elbows, T's, ways. Okay, these all are part of the BIM. Everything is a BIM, and everything is 3D intelligent component which have a detail attached. Okay, because 3D modeling, like it is a 3D modeling but with a attached detail. Okay, अब ये चीज़ तो आप बाकी 3D modeling में भी दे सकते हो. AutoCAD is also a 3D modeling. It also has a 3D modeling capability, but still it's not a BIM because it doesn't have any detail. We can't give any kind of detail. We have to put additionally. But when it comes to BIM, we have already detail attached. We can see each and every option. The wall is a wall. Okay, door is a door into BIM environment. Okay, so it's a very important that when we are going to design any structure,
then we have a special environment for this. Okay. Okay. So what is BIM? BIM is a environment in which a physical structure represented into a digital environment. Okay. अच्छा, अब नेविसवर्क एक BIM सॉफ्टवेयर है, ये हमें पता लग गया है, एंड इट्स अ प्रोजेक्ट रिव्यूइंग सॉफ्टवेयर. ओके. Okay, I hope you all understood. Okay, it provides what? It provides integration, reviewing, coordination, okay, associated data, okay, and we see all the issues into our system, into our design. मतलब वो क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट के सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए प्रतिबद्ध है. यानी कि अगर हम देखें, अगर हम हमारे पास कोई सिस्टम है या फिर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है and we are going to execute on the site, so before we have to see whether it is going to work or not. Let's say आप wall बनाते हो, गलती से it got clash into a column or a beam. Okay, so what is going to happen? First, it will increase the cost at the site. Okay. Secondly, आपका जो डिज़ाइन है, जब आप क्वांटिटी एंड एस्टिमेशन निकालेंगे, BOQ निकालेंगे, ओके, इट इज़ गोना अफेक्ट दैट. ठीक है. जब आप देखते हो कई बार जब वॉल बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि वॉल में कई बार ग्लिच सा कर रहा होता है. ठीक है. वो ग्लिचिंग क्यों आती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट ग्लिचिंग? बिकॉज वॉल आपका रूफ में क्लैश कर रहा है, वॉल आपका कॉलम में क्लैश कर रहा है, फ्लोर आपका बीम में क्लैश कर रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है. बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू रिजॉल्व दैट इशू. तो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग नेविसवर्क का प्रयोग करते हैं. दैट इज द नेविसवर्क. नेविसवर्क इज अ प्रोजेक्ट रिव्यूइंग सॉफ्टवेयर, जहाँ पे हम चीज़ों को रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं. ठीक है. इसके अलावा और भी कई ऑप्शंस हैं जो कि हम आगे अभी डिस्कस भी करेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इट हिस्ट्री. ओके. अब देखो, ये पार्ट वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक सिलेबस का पार्ट है, तो लेट अस नो अबाउट वेयर इट केम फ्रॉम. ओके. सो बेसिकली नेविसवर्क इज फाउंडेड इन शेफील्ड, यूके में इसकी स्थापना हुई थी, और ये नेविसवर्क लिमिटेड के नाम से पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसका नाम एक्चुअली में पहले इनिशियली जेटस्ट्रीम था. ओके. इन ईयर 1997 इट वाज जेटस्ट्रीम. आफ्टर दैट it gained popularity and it renamed as Navisworks. After that, Autodesk acquired the software that is the Navisworks. Officially basically क्या हुआ कि Autodesk ने प्रोडक्ट खरीद लिया. ठीक है. सेम एज गोज फॉर Revit. जैसे आप लोग सबको पता ही है कि जो Autodesk है वो बहुत बड़ी कंपनी है इनटू द AEC इंडस्ट्री. इनफैक्ट most of the like fields like entire engineering field have so many software regarding to Autodesk. So Naviswork is also one of them. Okay. So if you see, Naviswork is a part of Autodesk software. So इसी चीज़ के लिए फिर आपका Naviswork जो है Autodesk के द्वारा acquire कर लिया गया, and after that it continue to leads to development, 4D that is time and 5D cost simulation जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होती गई है, और काफ़ी ज़्यादा नए नए टूल्स आ गए हैं, ऑप्शंस आ गए, जिसकी वजह से आज हमें Naviswork इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर दिखता है इस इंडस्ट्री के अंदर. ओके. भले ये कोई डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं हो, लेकिन अगर ये सॉफ्टवेयर ना हो तो आपका डिज़ाइन में जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. बिकॉज देयर आर मैनी एरर्स वी हैव टू फिक्स बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ योर मॉडल इन टू द रियल वर्ल्ड. ओके. तो वी हैव टू सी what are the issues that can faced by your design. ओके. कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से हम इसको रिजॉल्व कर पाएँ. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेविसवर्क जैसा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं. तो चलिए अब हम बात करते हैं इट्स इम्पॉर्टेंस. ओके. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इस इंडस्ट्री. कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है, इतना इम्पॉर्टेंट भी है. अगर आप लोग रेविट सीख के आए हो तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, दैट डू यू नो अबाउट नेविसवर्क. क्या आप जानते हैं नेविसवर्क क्या है? डू यू नो अबाउट इट्स डिटेल्स एंड व्हाट. okay, because क्योंकि after let's say you have designed the project, okay, and like your senior said कि now let's just execute it, but you have to review it. okay. now if you say review, like how I can review, Revit में तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं. और क्लैश डिटेक्शन है भी तो वहाँ पे तो आपके पास कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है उसमें, हमें पता नहीं लगेगा दैट what kind of detail we have. okay. तो Naviswork क्या करता है? Naviswork catches that detail very easily. okay. Because of that it improves your
work. It improves your workflow. We can see each and every option. Okay, it improves the project coordination. यानी कि जब आप काम कर रहे हैं तो आप अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं प्रोजेक्ट्स के साथ। ओके, बाकी टीम मेंबर्स भी होते हैं तो आपको पता लगता है कि किसने क्या मिस्टेक की है, ताकि हम वो क्लैश रिजॉल्व कर पाएँ। ओके, अपने सिस्टम में ला के, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वेन एवर person do a Revit, then it automatically that increase the Naviswork use. ओके, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आप Naviswork करते हैं तो यू हैव अ वेरी हाई डिमांड एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल गेट अ ह्यूज हाई सैलरी। ओके, ठीक है, सैलरी के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे वैसे। ओके, इट इम्प्रूव्स योर एफिशिएंसी और एज वेल इट ऑल्सो सेव द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए क्लाइंट जो है वो नहीं चाहेगा कि उसके पैसे वेस्ट हों किसी भी प्रकार से, तो जो एडिशनल मटेरियल लगना होता है तो वो हट जाएगा वहाँ से, हम प्रोजेक्ट पे कॉस्ट बचा सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम प्रोजेक्ट की क्वालिटी के साथ खेल रहे हैं, नहीं, वी आर एक्चुअली इंक्रीज द क्वालिटी। ओके, इट एक्चुअली इंक्रीजेज द क्वालिटी कि हाँ हम कोई चीज़ फिक्स कर रहे हैं, तो फिक्स करने के लिए हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए विच एक्चुअली फाइंड द मिस्टेक्स इन टू योर डिज़ाइन। ठीक है, अब आपने तो अच्छा बना दिया कि हाँ यार इट लुक्स गुड यार, इट लुक्स ग्रेट, बट मे बी देयर इज अ मिस्टेक, so we have to find out the clashes and we have to fix it. Okay, yeah, we do join geometry work, but still there are many mistakes which we have done into our design. So for that fix we have to go through the Naviswork. Okay, so it saves the cost or and it also saves the time. Okay, because of Naviswork हमें एक्चुअली में रेविट के थ्रू तो पता नहीं लगता ज़्यादा कि हम विजुअली नहीं देख पाते हैं। हाँ, कुछ हद तक हम देख लेते हैं, लेकिन मान लीजिए अंदर हम डिज़ाइन कर रहे हैं लाइक इनसाइड द बिल्डिंग वी कैन नॉट सी विजुअली। ओके, मे बी यू कैन अनेबल द 2D वायरफ्रेम एंड यू कैन सी मे बी, बट स्टिल इट्स नॉट गोना वर्क। देयर शुड बी अ सॉफ्टवेयर विच कैन फाइंड द एक्चुअल इश्यूज इन टू योर डिज़ाइन, तो इट ऑल्सो सेव द टाइम ऑफ द डिज़ाइनिंग, कि हम अगर देखने में जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट इट ऑल्सो सेव दैट टाइम एंड इट बिकॉज ऑफ दैट इट इंक्रीज द क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कि क्लाइंट को एक तरीके से तसल्ली मिल जाती है कि हाँ नेविसवर्क अगर यूज़ हो रहा है तो ठीक है, आई एम टेंशन फ्री, उसका कॉस्ट बच रहा है जो कि हमें बचाने की कोशिश करना है। हम क्वालिटी के साथ नहीं खेल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, हम लोग बस उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं एंड इट एक्चुअली गिव्स वेरी मच सेटिस्फैक्शन। हम देखो प्रोजेक्ट जब डिज़ाइन होता है तो आप जानते हो, सभी लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यू नो हाउ मच वी हैव सो मैनी हेडेक्स रिगार्डिंग टू द क्लाइंट, सो वी हैव टू मेंटेन दैट overall balance between the client and the designer, so we need to give the ultimate satisfaction and because of that we have to use this software, so get maybe शायद उसको सॉफ्टवेयर से भी मतलब ना हो, मे बी क्लाइंट डजेंट गिव एनी लाइक, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नेविसवर्क यूज़ हो भी रहा है या नहीं हो रहा, बट वी नीड टू फिक्स द इशू बिफोर द एग्जीक्यूशन, सो वी हैव टू सी मिस्टेक्स इन टू आवर डिज़ाइन सो दैट वी कैन फिक्स। मिस्टेक्स हो सकती हैं, ओके, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। ओके, एंड इट ऑल्सो मैनेज द रिस्क, सी बिकॉज वी आर डिज़ाइनिंग अ प्रोजेक्ट, सो मे बी देर आर मैनी रिस्क होते हैं, हर चीज़ के होते हैं। लेट्स से बिकॉज वी आर डिज़ाइनिंग अ स्ट्रक्चर, इट डजंट मीन इट गेट फेल्ड, so we have to fix the design issue. Okay, or it gives accurate quantification and it also helps to estimate the cost. ठीक है, and it easily find out the clash, it easily detect the clash. That is why Naviswork is mostly used for this one thing, that is clash detection. बाकी चीज़ों पे तो आप ध्यान दो ना दो, maybe there is a timeliner, maybe there is a quantification, maybe there is a rendering, most of the time we will discuss about the clash detection. The clash detection part is so important that every person who is doing Revit, they will use this software for doing the clash detection work. Okay, now let us move to the next point, that is the key features. What are the features of this software? अब डेफिनेटली जाहिर सी बात है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्यों यूज़ हो रहा है, किस लिए यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ रीज़न तो है ही, और कुछ ना कुछ इसके कारण भी है, और कारण ये भी है इसके फीचर्स क्या क्या हैं। इसके फीचर है दैट इज़ मॉडल इंटीग्रेशन इज़ वेरी ईजी।
आप तुरंत इसको लिंक कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं फाइल को, रेविट की फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एक अलग से एक फॉर्मेट और आता है NWC करके, उसको भी आप लेके आ सकते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है। क्लैश डिटेक्शन इज द बिगेस्ट फीचर इन इटसेल्फ, जो कि इसकी यूएसपी है, मतलब लाइक दिस दिस इज द यूएसपी ऑफ द सॉफ्टवेयर कि द क्लैश डिटेक्शन इज द की टू फिक्स योर डिजाइन, ठीक है। इट इजीली फाइंड्स 4D सिमुलेशन 5D सिमुलेशन हो जाता है इसमें आराम से। आप क्वांटिफिकेशन कर सकते हो विच इज ऑलरेडी डन इन टू रेविट, बट इट ऑल्सो हेल्प इन क्वांटिफिकेशन, ठीक है, लाइक फिक्स एंड फाइंडिंग द मोर इशूज लाइक, ठीक है। Rendering and visual, you can also do that. Also integrated collaboration, because it's a BIM software, so it also help into the collaboration, okay. And it also help into the review and navigation, okay, because it's a project reviewing software, so we can see each and every option easily inside the building as well, okay. As I am telling you कि Revit में वो चीज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि आप ये चीज़ Navisworks में बहुत आराम से कर सकते हो। You can see inside the building what is going on, okay. It has many features, unique features that in fact Revit doesn't have, okay. So also there is an interface checking, like one object is clashing to the other object, and you can see that clashing issue, okay, ठीक है। And because of that, project improves in very much, okay. अच्छा, okay, actually I want to ask a question, मैं सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाउ मैनी टाइम्स दैट प्रोजेक्ट गोज अंडर रिव्यू, जब आप लोग साइट पे होते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है, हाउ मेनी ऑफ यू आर वर्किंग ऑन द साइट, कंस्ट्रक्शन साइट पे कौन कौन काम कर रहा है अभी, लेट मी नो, लाइक यू हैव विजिटेड ऑन द साइट एंड समथिंग काइंड ऑफ, like let me know in the chat box, let me know. And how many of you send the design to fix the issue, कितनी बार होता है ऐसा? And why, and what is the reason behind that, what is the reason behind that? Okay, to avoid conflicts sometime, okay. During MVP coordination, okay. Anyone else? Anyone? और कोई बताना चाहेगा? Okay. Okay, the question is that how many times you send the drawing back to the designer? Okay, how many times? Like there is an issue, you see that it is not executable, and you send it back. How many times it happens? कितनी बार होता है ऐसे? Hmm. Okay. Depends on work. Okay. Hmm. Okay. Hmm. Okay.
depends on the project and the client. If they are proposing some changes, architecture and structural, every time it needs more time, column windows and conflict each other. Okay. Okay, the reason is behind that the designer and the site engineer are the different thing. Like if you talk about the designing process and if you talk about the execution process, these are both different things. Okay. Secondly, when it comes to the designing, we cannot see some things. Okay. Sometimes people do design into the rabbit, but they forget the clash detection part, and it happens sometimes because some people used to take rabbit but they are not seeing the clashing part and clashing issues into the design, so they just forget it and send the project onto the site. And when it comes to the conflicting issues, like आप देखते हो कि जो डक्ट है वो आपका कॉलम में चला जा रहा है, जो डक बीम है वो किसी और में ही कोलाइड कर रही है, आपका जो पाइपिंग है वो बीम के थ्रू आर पार हो रहा है, तो इट हैज़ there are many issues and because of that it cannot execute into that real time, so we have to fix this issue before it executes on the site. So that's why Naviswork is very important. If you want to execute the project very easily, then we have to do the review first. We have to see whether maybe there are many other reasons of the for the retaining back, like they want to do some changes and all that stuff. There are other reasons, so and one of the reason is also this. Okay, this is also a reason why we send back our as a site engineer, I will send back the designing sheet or whatever. Okay, and ये एक रीज़न है. ओके, और भी अदर रीजंस होते हैं बट दिस इज ऑल्सो अ रीज़न. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay, now let's move on to the another part. Now let's talk about issues. Okay, yeah, maybe you have seen a pattern that most of the points are similar now. ठीक है, कि यूज़ कहाँ होता है सिमिलरली. देखिए, यूज़ तो यही होगा आपका मॉडल इंटीग्रेशन में होगा, 4D सिमुलेशन में होगा, डिज़ाइन कोऑर्डिनेशन में होगा, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में होगा, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्लाइंट प्रेजेंटेशन, बीएम इंटीग्रेशन. ओके, सो बेसिकली यूज़ क्या है? यूज़ यही है इसका. बेसिकली ये हमारा 4D सिमुलेशन करता है, प्रोजेक्ट को अच्छे से रिव्यू करता है. हमें रिव्यू करना होता है प्रोजेक्ट को. कंस्ट्रक्शन प्लानिंग इसमें काफ़ी आसान हो जाती है, चीज़ें एग्जीक्यूटेबल हो जाती हैं आफ्टर दैट इफ़ यू फाइंड फिक्स एंड वी फिक्स द इश्यूज बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट. तो अगर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट को अच्छे से डिज़ाइन करना चाहते हैं, देन वी हैव टू फिक्स द इशू फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी कैन सी how the project is going to be executed. Also we can plan the project as well. Okay, like maybe how many of you have heard about this software name Primavera? किसने सुना हुआ है? There is a software named Primavera. Like you can insert the detail. Okay, let me know in the chat box. Type yes if you know. Type yes if you know the software name. Type yes if you know the software. Okay, so basically we know that it's a project management software, and if we insert the detail of that, like any kind of Excel detail, you can also do the simulation process and you can also see how the project is going to be executed. You can see the simulation process like beam is constructing and like आप देख सकते हो कि कैसे फाउंडेशन पहले कंस्ट्रक्ट हो रही है and how and it will construct by itself and it is going to be real time, like date to date, like proper timing there will be कि like project किस टाइम शुरू हो रहा है और किस टाइम पे खत्म हो रहा है. You can see the entire process, you can see the simulation of the project completely. You have that option with the help of Navisworks. You can see each and every option that what will execute first. I'm sorry for fumbling. Okay, let's say पहले हम let's say it is going to be set execution, like we will see the excavation part and after that foundation, footing, then plinth beam, then DPC, then
The substructure part will complete, and after that we will go for the superstructure, like executing of walls, doors, windows, ceiling, roof, beam, column, and of all that stuff is going to be built day by day, day by day. And after that we will see the complete design. That is the power of Naviswork. You can see the entire simulation process with the help of Naviswork. Okay, I hope you all understand key what is Naviswork used for. Not only for the clash detection, but you can also do the simulation work as well. Okay, you can do also do the quantification work. You want to see that let what is the result after let we have find the clashes, and if you want to see that what are the what are the issues we have come over, and you can see. So we were talking about the simulation process, right? So yeah, we can easily see the entire simulation process easily. Okay, so that is the power of Naviswork. This is the use of Naviswork. Okay, now let's move to the another point. Now let's talk about the job and scope. You all know that you are learning this software, and there is a reason, that is job. Okay, what are the opportunities after doing Naviswork? That what where we can go after doing Naviswork? Then these are the companies where you can find your job positions. These are the places where you can work easily, you can work tension free. These are the MNCs where you can make your career and make your dream big. Okay, so after doing Naviswork, you can go on these companies and you can find a great job and a great salary, and you can go for these positions. Okay, like you can go for the BIM coordinator, BIM manager, there is a project manager, design coordinator, visual design and construction specialist. Okay, VDC, which is estimator and quantity surveyor. You can go for the class detection specialist, you can go for the MEP coordinator, you can go for the BIM modeler. Okay, so after doing Naviswork, like if you have done first Revit, and after you are doing Naviswork, it's a deadly combination. It's a deadly combination, and you can go on these companies. मतलब आप लोग जॉब जब आप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ Naviswork, देन इसके अलावा कई सारी कंपनीज है. देर इज L&T, as you can see there is a mention. You can see HCC, you can see DMRC, you can go for the Case International, you can go for the Arup Group, you can go for the Reliance Industries, you can go for the MR Group. Okay, there are many big companies which are dealing in, like there is a BIM engineer company. Okay, so after doing Naviswork, you can find great job, you can find great you can go for these companies as well without thinking anything. आप कुछ बगैर सोचे आप एक तरीके से Naviswork करिए. After that you will go for the big companies. Yeah, but you have to do first Revit करना ज़रूरी है, and I know you have done Revit, and after that you should also know the Naviswork, and it's very important because Naviswork के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो पूछेंगे डू यू नो Naviswork, क्या आता है आपको Naviswork. If you know, then yes, you are welcome, and if you don't know, then maybe you will find job anywhere else, or you will just going for the Revit. You will just being a BIM modeler. अगर आप BIM मैनेजर की पोजीशन पे जाना चाहते हो, you will get a good salary and you want promotion, then Naviswork is very important for you. Okay, तो Naviswork काफ़ी हद तक ज़रूरी है आपके करियर के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके एम्बिशंस को पूरा करने के लिए. Naviswork is a great opportunity for you. Okay, ठीक है. Now let's start the software and let me introduce to the software. Okay, so let's just introduce the software. Okay, let me stop the presentation and let me share my screen to introduce the software. Okay, let me share the screen and you can see this is the Naviswork. Okay, let me come on to the desktop. Okay, so you can see that this is my desktop and there is Naviswork Manage 2024. Okay, people used to say Naviswork. अब देखिए Naviswork में और भी verticals आते हैं. There is Naviswork Freedom, there is Naviswork और भी अलग अलग वर्जन्स हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको Naviswork Manage ही यूज़ होता हुआ मिलेगा, जिसको Naviswork ही बोलते हैं. मेन वर्जन यही है. तो वो फ्रीडम भी होता है, एक अलग से आता है, वो सिमुलेशन भी करके भी है एक, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि सभी Naviswork मैनेज पे ही जाएं. करंटली आई एम यूजिंग Naviswork 2024. ओके,
मैं Navisworks 2024 यूज़ कर रहा हूँ एंड दिस इज़ माई सॉफ्टवेयर. ओके, वेन एवर यू विल स्टार्ट द सॉफ्टवेयर, लेट मी क्लोज इट. ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है? सिंपली यू हैव टू जस्ट डबल क्लिक ऑन द सॉफ्टवेयर एंड इट विल स्टार्ट. ओके, एंड इट विल सिंपली ओपन. सी, ओके, तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे आप Navisworks का पूरा एक इंटरफेस देख सकते हैं. यू कैन सी देयर इज अ ब्लैंक कैनवास हियर. Okay, and this is completely like you can see the menu bar, you can see the quick access toolbar. Okay, there are many things we will discuss each by each. Okay, we'll go through the interface first. पहले हम interface और पूरी इस GUI को समझ लेते हैं. What is this GUI? Okay, तो basically इसको हम लोग बोलते हैं graphical user interface. Okay, this is known as graphical user interface of this software. अब इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे मिलेगा मेन्यू बार. दिस इज द एप्लीकेशन बटन. इस एप्लीकेशन बटन में आपको स्टार्टिंग में ये ऑप्शंस मिलने वाले हैं. ठीक है, नीचे के ऑप्शन सारे डिसेबल्ड हैं और स्टार्टिंग के दो, दैट इज द न्यू फाइल. जैसे कि अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन. और अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है, लेट्स से यू इफ यू वांट टू ओपन द सेव फाइल, then you can open it. Okay, if you want to see the sample files, you can also explore that. इसके अलावा save as, these options are completely disabled. Okay, you have done so many software, then I don't need to introduce these options. Okay, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको options भी मिलता है जहाँ पे आप इसके general settings देख सकते हैं. ठीक है, undo location and all that stuff जो यूजुअली आपका मेन सेटिंग में आता है. डिस्प्ले ऑप्शन क्या है आपका, लिंक्स मैनेज करना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो. बाकी NWC, NWD, ओके, फाइल डेट आपका 3ds मैक्स. ओके, वी हैव डिफरेंट DWF, वी हैव FBX. ठीक है, यू हैव PDF ऑप्शंस. ओके, यू हैव टूल्स डिफरेंट. सो ये आपको पूरा इसमें ऑप्शन मिल जाता है. इसके अलावा फिर नेक्स्ट हम बात करें तो यू कैन सी द अदर थिंग्स दैट दिस इज़ द क्विक एक्सेस टूल बार. जो चीज़ हमें आपको यहाँ पे दी हुई है उसी को यहाँ पे हम क्विक एक्सेस कर सकते हैं. आपको जैसे कोई सेव फाइल ओपन करनी है, लेट्स से I have to open any saved file. I have to see any NWC format. Let's say I'm just going to open this file. Okay, this is an NWC, and you can see the project has been appear. Okay, you can go for this, and there is a same process for rotating and orbiting. Like if you go with shift middle mouse, then you can orbit. Okay, from scroll up, scroll down, you can go for the zoom in, zoom out. Okay, and for the panning, just click on the middle mouse and you can pan. Okay, you can see my project. This is my restaurant design. Okay, okay, also I have done the clash detection work. If you haven't seen a YouTube video on this topic, I have already done the topic and you can go and check out on the YouTube. Okay, okay, it is officially available today. Okay, आज ही उसको publish किया गया है and you can see. Okay, and you can see that you can see each and every option. Okay, if you go want to see the clash detection that क्या क्या clash इसमें हो रखे हैं, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं. After that you can also see the options are also enabled after inserting. Like you can see the append option. You can see many different options are there which we are going to explore into the future sessions. Okay, you can see the viewpoint where you can just view and save the viewpoint. Like you want to just save a view. Let's just say मैं एक व्यू ले लेता हूँ. Let's I just want to save this view. So you can just click on the save viewpoint and it will save. And you can just rename it. Like मैं यहाँ पे इसको rename कर सकता हूँ. Let's say it's a 3D view. तो it's a 3D view. Okay, ठीक है. And let's just comment to the top and let's say it's a top view. I'm going to say save it's a top view. ओके, ठीक है. एंड इफ़ यू वांट टू जस्ट गो इनटू इनसाइड, आप इनसाइड भी जा सकते हैं. ओके, मे बी इट्स गोना टेक सम टाइम एंड या वी आर इनसाइड नाउ. ओके, यू कैन सी इनसाइड व्यू. ओके, वी कैन सेव इट फ्रॉम हियर. यू कैन सी द इनसाइड व्यू. ओके, so now let's just go back and you can see the 3D view, top view and inside view. Okay, this is the power of Navisworks, that you can create your own views and you can just save it. Okay, see, तो ये काफ़ी आसान है कि जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप अपने व्यूज़ को सेव देख सकते हैं. एंड यू कैन सी ईच एंड ऑप्शन हियर एज वेल. एंड यू कैन ऑल्सो सी द orthographic view. You can just shift into the perspective and orthographic at the same time. ठीक है, you know the difference between the orthographic and like this is the orthographic view which is the usual Revit view and this is the
perspective view, which is the real time view actually. And let me tell you that as a humans, we usually see the entire world into the perspective view. We never see any uh, we are not computers, so we don't see our view like as an orthographic. हम हमेशा पूरी दुनिया को ऑर्थोग्राफिक व्यू में नहीं बल्कि पर्सपेक्टिव व्यू में देखते हैं, इसलिए हमें 1.2.3 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू मिलता है. ठीक है, इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, जैसे वी हैव द रिव्यू टैब वेयर वी कैन जस्ट measure and give some dimension check. We have to give some colors and all that stuff. We can do that. We can also do the animation work here. We can just create any kind of animation work. Okay, we can also see the views. We can manage the view. Okay, there is an output tab. Okay, we have to export any kind of file or something. Then we have the BIM 360 clue. Okay, and we have the final render tab. So these are the tabs which we are going to explore in detail. We will see each and every option. We are going to do the clash detection work in future in very much detailed part. Okay, so काफ़ी कुछ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, एंड वी हैव गोन थ्रू ईच एंड एवरी ऑप्शन. ओके, एंड यस, रेविट इज गोइंग टू यूज पैरेलली. ओके, सो या हम दोनों चीज़ें करने वाले हैं. वी विल टेक एनी प्रोजेक्ट एंड वी विल फिक्स द इश्यूज, क्योंकि रेविट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है. तो आपको रेविट और नेविसवर्क में एक जुगलबंदी भी देखने को मिलेगी इस पूरे कोर्स के अंदर. ओके, सो या, so I hope this is going to be our entire course on the Naviswork, and this was the entire detail on the Naviswork course. Okay, so let us start the Q&A session first. तो आई होप आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स होंगे आफ्टर दिस एंटायर सेशन. ठीक है, तो क्या क्या आप लोगों के सवाल है, नेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ठीक है, मैं चैट बॉक्स से ही सवाल लूँगा. तो अगर आपको विजुअली कुछ पूछना है या फिर सॉरी आपको ऑडियो से पूछना है, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा अभी, क्योंकि चैट सेक्शन से ही अभी हम लोग को चैट करेंगे. सो या, क्वेश्चन पहला आया है, हाउ मेनी डेज इज गोइंग टू बी. इट इज़ गोइंग टू बी लाइक हाफ अ मंथ, मतलब 15 to 20 days. ओके, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 month लग सकता है इसमें. वो तो मैक्सिमम केस हो गया, डिपेंडिंग अपॉन कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट वी आर कवरिंग. ठीक है, तो हम एक एक ऑप्शन को कवर करेंगे यहाँ पे डिटेल में. तो हाँ, इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम. इनिशियली क्लासेस में हम लोग थोड़ा कुछ बेसिक्स ओवरऑल कवर करेंगे. We will see the basic tools, we will go through the each and every tab, and after that we will go for the clash detection, quantification. Okay, we will see each and every option so that it is going to be very easy for you. तो आप बहुत आराम से कवर कर लेंगे. Okay, Naviswork installation. Okay, I will provide the link into the WhatsApp group so that you can download the software. How many days it make to take to learn Revit? You want to learn Revit or Naviswork first? Because Naviswork, see, uh, Naviswork is very much important, but you also should know Revit as well, because Naviswork और Revit में ही मोस्टली यूज़ होता है, बिकॉज वी हैव टू फिक्स द क्लैश इश्यूज. तो हाँ, Revit की ज़रूरत पड़ेगी उसमें. हाँ, तो बिकॉज वी नीड प्रोजेक्ट, तो Naviswork आप Revit के लिए आप 81992988 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आई कैन गिव द कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट हियर. ओके, दे विल शेयर ऑल द डिटेल्स. ओके, there is a contact number 81. Okay, this is the number where you can take the details and talk to the our consultation team. Anyone else, और किसी को कोई क्वेश्चन और किसी को कोई सवाल? Yeah, the recordings of the session will be provided with a proper folder. There will be a proper folder. So tomorrow maybe it will be updated. आज का सेशन जो है वो आज अपडेट हो जाएगा, मतलब आज तो नहीं, कल तक अपडेट हो जाएगा. एंड यू कैन सी द रिकॉर्डिंग ऑफ द ये टुडेज सेशन. ठीक है, तो जो भी हमारी रिकॉर्डिंग्स होंगी वो हम प्रोवाइड करवाएंगे. ठीक है, एंड द सेशन मैं बता दूं कि प्रोसेस क्या रहेगा हमारे बैचेस का. दैट मंडे टू फ्राइडे विल बी आवर क्लासेस. ठीक है, मंडे टू थर्सडे, लाइक मंडे से थर्सडे तक हमारी रेगुलर क्लासेस रहेंगी, और फ्राइडे को हमारा लाइव डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन रहेगा, एंड सैटरडे संडे विल बी ऑफ. दिस इज गोइंग टू बी द एंटायर कोर्स सेशन. ये हमारा सेशन रहेगा, ये हमारा सिस्टम रहेगा. देख सी Naviswork इज मोस्टली रिक्वायर्ड वेयर, बिकॉज देखिए Naviswork आपका ज़्यादातर यूज़ होगा इन द केस ऑफ Revit. ठीक है, इफ आवर मोस्टली, आर यू वर्किंग विद द CAD सॉफ्टवेयर?
ओके सो आई वुड recommend you to learn Revit also because क्योंकि जो हमारा काम होगा क्लैश डिटेक्शन का वो Revit के थ्रू ही होता है, जो BIM सॉफ्टवेयर है उन्हीं के थ्रू होता है. हम्म. देन इट्स ओके. अगर आपने Revit सीखा हुआ है देन इट्स फाइन. यू विल लर्न Navisworks easily. या बेसिक रिवीजन आप करते रहोगे, जैसे जैसे हम जब क्लासेस करेंगे तो उसी में आपका रिवीजन भी कवर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रेविट भी करने वाले हैं तो पैरेलली होता रहेगा आपका. नो इश्यूज. एनीवन एल्स और कोई क्वेश्चन किसी का? Okay, so maybe there are no questions now. Okay, so let us wrap up this session. So this was the entire session for the Naviswork. This was the day one of the Naviswork. So I hope you learned a lot of things from this session, and I hope you will all are ready for the this new course और एक जर्नी पे हम लोग चलने वाले हैं and learn each and every option and learn this clash detection option. Okay, so thank you so much for joining the session now. Have a great day. Good night. Take care. Thank you. खुदा हाफिज. धन्यवाद आप लोगों का सभी का. Thank you. आप लोग लीव कर सकते हैं. Have a great day. Good night. Take care. Thank you so much. Thank you. You can all leave. Thank you. We'll meet you tomorrow at the same timing. Okay, and after that we will continue our classes on Monday. Thank you. Thank you so much. You can all leave. Thank you. Have a great day. Thank you. Thank you.